Hello and welcome to Zoom. This is Kushumika, and today we have some very special guests with us. The director of Ek Diwani Ki Diwaniyat, Milab Zaveri, and the producer of the same, Anshul Garg. Welcome to Zoom. Hello, sir. Hello, hello. Hello, sir. Hi. So, first of all, congratulations. How are you feeling? Feeling humbled, grateful, feeling happy, uh, relieved. You know that the audiences have loved the film so much Yeah. that it's turned out to be such a big hit, such a super hit, and grateful, as I said, grateful to the audiences, grateful to Harsh, Sonam, Anshul, Raghav, and the entire team who's made this film, who's been behind this film. It's been a crazy journey. This film we started from we I met मिलाप और 10 दिन में हम फ्लोर पे चले गए इस पिक्चर को लेके एंड हमने आई वी डिडंट इवन गेट टाइम टू थिंक अबाउट कि कैसे करना है क्या करना है बट एवरीथिंग वेंट इन फ्लो एंड सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया इट्स अ वेरी गुड फीलिंग टू प्रोड्यूस अ film from being a music producer to starting to produce films now and for giving the first film as a super hit. It's a great feeling. So, what kind of thoughts you two had, and how much did that align with the numbers after the release? As we were coming on Diwali, we had like certain numbers in our mind and we have done way better than what we were expecting. Okay. So our expectations was pretty lower than what we have gotten. So we are very happy with the numbers. Our numbers are better than what anybody expected. Forget us. They are better than what the industry expected, the trade expected, our competing film expected. Right? There's a old saying of David versus Goliath, and I think that has turned out to be true again. While Goliath also has done well, David also has done superbly well. So I think it's a win-win for everybody. And I think the I always say that एक dark horse होता है. This film ये ऐसा dark horse था जो दिन में भी नहीं दिखता था किसी को. But suddenly people are calling, messaging. My phone is just exploding with congratulation messages from the entire industry, friends. So I think we've been fortunate that the audience has loved our film so much. As a writer as well as a director, how was the journey for you? Because I feel when we do both of the things, sometimes we become very judgmental, like, is it good, is it not really that good, or my expectations are not really matching. So how was it for you? Well, I mean, I've been a writer most of my career, writer, director, the last, I think, 16 years. And always I feel that when you're a writer, like you said, there are flip sides, right? Yeah. Sometimes it helps you a lot because you can on set improvise the scene that still the scene works for the whole story. Sometimes what happens is because you have so much conviction as a writer that you don't question it as a director, right? So you have to balance the two things. So in this film, for example, when I wrote it with Mushtaq Sheikh, there were certain things we wrote, and when Harsh came on board, Harsh had some ideas, had some thoughts for his character's backstory, and that improved the script, that improved the film, that improved me as a director, right? So many small things that Harsh contributed. Sonam also, which she did in the film. So as I said, it's like he said, it's been a journey. And the journey from paper to celluloid has been an amazing one. And I think Harsh told me that आपने जो फिल्म सुनाई थी आपने उससे बेटर फिल्म बना दी. I think उससे बेटर को तो कॉम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता. Like, you are debuting as a movie producer. So what did you see in the film that kind of, made you say yes to this as a I just producer? want to say one small thing. Yeah. Because my Masti 4 is also releasing. I just want to say I'm so happy I popped Anshul's cherry. Thank you, Anshul. Interview is not over yet. मेरा भी नंबर आएगा भी. So first thing that is I think most of the people who know me they know it too that मैं अगर एक movie कर रहा हूँ it's gonna be musical. So this film was a love story, had to be a musical, had 5 songs in the film already placed in the film, and we added 2 more. We've taken it to 8 now, so made it a big time musical film. So that was my first thing. Whatever films I produce, this one, another 2 that I'm thinking of doing,
have to. I want to be known as a producer who produces musical films. Okay. Even if I'm producing an action film, it'll be a musical in a certain way. So that was the first reason for me to get on board on this film. एंड बाकी स्क्रिप्ट बहुत कमाल लगी मुझे. स्क्रिप्ट इंटरवल पॉइंट बहुत इंटेंस लगा. इनफैक्ट व्हेन यू सी द स्क्रिप्ट, व्हेन यू वॉच द फिल्म, यू विल सी पिक्चर में 3 डिफरेंट इंटरवल पॉइंट्स हैं जो आप सोचोगे कि चलो भैया उठ के चले जाते हैं जब आप मूवी Even I देखोगे. thought the same. तो जब वो घर आती है हर्ष के, जब वो कहता है कि यहाँ मंदिर है, तो वो इंटरवल पॉइंट है. और भी इंटरवल पॉइंट्स है पिक्चर में. मिलाप ज़वेरी दिखती है जो. हाँ, even I thought that's a interval point. सो मिलाप ज़वेरी का एक सीन में लोग एक डायलॉग बोलते हैं और फिर वो डायलॉग लोगों को याद रहता है. मिलाप ज़वेरी के आपको डायलॉग लिखने पड़ेंगे, वो इतने डायलॉग्स होते हैं. आप देखो, हमने 6 डायलॉग तो पहले ही वायरल हो गए हमारी पिक्चर आने से पहले. ही इंसिस्टेड टू पुट अ डायलॉग इन एवरी सॉन्ग. Thankfully, all the dialogues have worked and they have gone, like, they have traveled so much. सब जगह से इतनी रील्स, डायलॉग पे रील्स. तो आई एम थैंकफुल कि इनका जो एक विंटेज वाइब जो पहले होता था वो हमने रिपीट किया. ये पिक्चर भी थोड़ी ऐसा लगता है कि आप 2000 की कोई पिक्चर देख रहे Yeah, हो. giving that vibe. म्यूज़िक भी सुनते हो तो आपको लगता है कि यार हाँ, ये नॉस्टैल्जिया वाइब है म्यूज़िक की. सो दैट्स वाई आई बिलीव्ड इन दिस फिल्म, बिकॉज वो वाइब थी, वो म्यूज़िक, इसमें पोटेंशियल था म्यूज़िक आने का. एंड इट हैज़ अ वाइब ऑफ बिकमिंग अ कल्ट फिल्म. You know, it's a Diwali release and there is a box office clash. So, I want to know from you and from you also, what were your thoughts before the release regarding the clash, especially? My thoughts were clear. We've seen box office on Diwali is round about from 70 to 80 crores. Yeah. And जो picture आ रही है, it's produced by a very big, right now the biggest producer in the country. उनकी picture आ रही है. But it's not a sequel. It's a part of that universe. But it's a new film. It's a new character. Yeah. So I thought that even if it opens at a certain number, we'll still have space to release it. And हम बॉक्स ऑफिस का एक सर्टेन नंबर, क्योंकि माई फिल्म इज़ 25 करोड़ बजट फिल्म, द अदर फिल्म इज़ 200 करोड़ बजट फिल्म. सो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस. We have to break even, we had to reach a certain level that we could reach with certain limitations and certain limited screens as well. Right. So we were okay, but Diwali being such a big day, such a big holiday, we decided to come on that. A lot of people were doubting us कि दिवाली की पिक्चर नहीं है, आप दिवाली पे क्यों आ रहे हो, ये आपको कहीं नॉर्मल डे पे आना चाहिए. The risk factor. Yeah, but I have always taken risk in life. I left my father's business, came to Bombay, opened a music label when I was 23 years old. And 10 साल हो गए मुझे म्यूज़िक बनाते हुए. I've got the fastest growing label in the country. I've got 45 million subscribers on YouTube. तो वो रिस्क पे ही काम किया है मैंने अभी तक. तो वो रिस्क लेते एक फिल्म का रिस्क लिया. मैंने सैटेलाइट डिजिटल भी नहीं बेचा है अभी तक पिक्चर का. Yeah. Though I was getting offers before I released the film, but I wasn't getting the offers that I wanted, the number that I wanted, I wasn't getting. So I was so sure about my product, so sure about the music that I have produced. तो ऐसे ये पिक्चर बनी है यार. As you just mentioned about the satellite and OTT, you know, we mostly see in today's films, those are decided before the release. So why did you decide to not to do that and choose a different path? See, being a producer for the first time, of course, nobody is going to trust me that what product I am making. मैं एकदम ही खराब प्रोडक्ट भी बना सकता हूँ because it's my first time. Right. तो आई डोंट ब्लेम एनीबडी फॉर दैट कि नए प्रोड्यूसर्स को क्यों चांस नहीं मिलता. यू हैव टू टेक दैट रिस्क. पहला रिस्क आपको लेना पड़ेगा, या मैं इस पिक्चर से 10 साल आगे चला जाऊंगा, या इस पिक्चर से 5 साल पीछे चला जाऊंगा. तो वो जो स्टेप होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है. आई टुक दैट स्टेप एंड आई बिलीव्ड इन व्हाट आई वाज डूइंग. आई बिलीव्ड इन व्हाट मिलाप वाज डूइंग, माय टीम वाज डूइंग. तो उस बिलीव पे हम आगे बढ़े और जो हमने अचीव किया, आई थिंक गॉड हैज़ बीन काइंड. उन्होंने हमारा गुड फेथ देखा और हमने सही नीयत से काम किया है और वो रिस्पॉन्स फिर हमें मिला है ऑडियंसेस से. वेल, लाइक अंशुल राइटली सेड, यू नो, जो क्लैश था वो दिवाली का टाइम था, बहुत बड़ा फेस्टिव टाइम है. और मेरे करियर में ना, मैंने पहले भी क्लैश किया है जब सत्यमेव जयते गोल्ड के साथ आई थी. और उस वक्त भी मैं था जिसने भूषण जी और निखिल अडवाणी और जॉन से कहा कि लेट्स कम अगेंस्ट गोल्ड.
मेरा हमेशा मानना है कि जब एक क्लैश होता है ना तो द फिल्म दैट इज सपोजिटली स्मॉलर ओके इफ इट्स अ गुड फिल्म इट गेट्स एन एडवांटेज बिकॉज उससे उम्मीदें कम होती है Right. और उसके पास फिर भी छुट्टी होती है टू प्रूव इट सेल्फ एंड परफॉर्म और जब आप क्या होता है जब वेन एवर डेविड टेक्स ऑन गोलायत एंड डेविड डज वेल डेविड बिकम्स गोलायत so that is exactly what like Anshul said today is Monday is the 7th day of the two films and today both the films are going to do this more or less the same box office collection for the day whatever they do today we are going to do today whatever we do they are going to do today and it was unthinkable 6 days back when both the films came and when we have a fraction of their shows and screens but despite that we're going to collect equal to them today on Monday. So I think this clash has worked for them also. It's worked for You also. us also, Yeah. and I would always want, if possible, to clash on a holiday period with another film because a holiday always it negates the clash to an extent. मैं नाम और पिक्चर तो आपको नहीं बताऊंगा लेकिन मैंने ये डिसाइड किया है आफ्टर मुझे पहली बारी मैंने ये दिवाली का जो दिवाली की जो मिठाई है वो चखी है और मैं अब हर साल सिर्फ हॉलीडे पे ही आने वाला हूँ अगली पिक्चर भी जो मेरी आएगी वो हॉलीडे पे आएगी एंड ऑफ कोर्स क्लैश ही होएगी आई थिंक मैं यही बोलने वाला था कि मतलब मस्ती तो अभी 21 नवंबर आ रही है लेकिन तेरा यार हूँ मैं विल बी अ हॉलीडे रिलीज ओनली एंड इट विल ऑल्सो क्लैश that is something which Indu ji and me have decided very strongly. You know, I want to ask you this. You took a few years. Now you are back with Diwaniyat. You have Masti 4 next. So how does that make you feel? Grateful, lucky. मतलब एक साल पहले today is 27th of October. Yeah. Last year 27th of October I didn't have a single film. Not a single film as a director. And in a year, I have directed 3 films. One is released and has become Touchwood a super hit. Masti 4 is on 21st November. Tera Yaar Hu Main with Aman and Akanksha Sharma is now in December. And I'm very grateful and fortunate. And I hope कि जो मतलब नारियल फूटा है, thanks to Anshul, शुभ नारियल फूटा है with Diwaniyat and the good luck continues with Masti 4 and Tera Yaar Hu Main. And all the films are close to my heart in different ways. And I'm just hoping audiences love those films also. You know, promotion is a big part of today's films, and we did not really see much promotions before the release. So, how did that thought came up? Ma'am, if you were on Instagram, you have only seen my films, our films promotions. So, what extraordinary decision that Anshul took with Aman Gill and Gaurav Verma and Raghav Sharma was that the age is digital. Yeah. Okay, most of your audiences are on their phones, are on Instagram, are on WhatsApp, are on Facebook, are on Twitter, are on Snapchat, all these new platforms, these young kids that they all are on, these young boys, and girls. So they decide that we don't really need to go to malls and we don't need to go and do events. We don't need. So that was the vanilla form of marketing. They said हम टूटी फ्रूटी करते हैं, कुछ अलग करते हैं. So we decided on this marketing part. I like to say that. So I and Raghav Sharma, so we both are known for marketing. We've marketed songs जो लोग पिक्चर मार्केट नहीं कर पाते उस लेवल पे हमने सॉन्ग्स मार्केट किए हुए हैं before we did this film. So my thought process of not taking my actors out was that I know I have too many songs which we have shot in the film. We had a teaser, we had a trailer. Yeah. तो डिजिटली हमारे पास इतना कंटेंट था टू उसको हमने बोला जब तक हम थिएटर में नहीं जा रहे हैं तब तक हम इसको डिजिटली फोड़ेंगे. आफ्टर दैट हर्षवर्धन स्टार्टेड हिज रोड ट्रिप एंड देन वी रीच्ड फ्रॉम बॉम्बे टू अब दिल्ली में बैठे हैं. अब कोई भरोसा नहीं कल हमारा जब ये सारे इंटरव्यूज़ ख़त्म हो जाए तो हर्ष फिर से अपनी बस में चढ़ के वो कहाँ पहुँच जाए. वी डोंट नो. अगर मैं उसको उस दिन रिलीज़ के अगले दिन नहीं बोलता कि कल से हम ये रोड ट्रिप शुरू करते हैं तो शायद वो मुझे भी झूठ बोल के अगले दिन सुबह निकल जाता. So because I have restricted my actors not to go out, not to be seen, I told even Sonam that don't even get papped. Try and चकमा दे के निकलो जहाँ भी जाना है आपको किसी को पता ना चले. जो विजुअल हमारा मूवी का है जो कैरेक्टर क्योंकि मेरा जो हीरो है
वो पिक्चर में प्ले कर रहा है द मोस्ट पावरफुल गाय इन द टाउन, और मेरा हीरो रियल में है ऐसे, भाई कैसे हो, आप ठीक हो. सो ही इज़ द स्वीटेस्ट गाय. तो उसकी बॉडी पे मत जाना, इज़ अ हल्क बट एट द सेम टाइम बहुत स्वीट है. तो वो कैरेक्टर जो वो प्ले कर रहा है वो मैं चाहता था वो इंटैक्ट रहे. एंड देन फिर जब पिक्चर रिलीज़ हो गई, लोगों ने पहले दिन जाके 10 करोड़ बॉक्स ऑफिस हमने मार दिया, लोग थिएटर में चले गए, लोग पसंद करने लगे, सारी वीडियोस वायरल होने लगी. मैंने कहा नाउ वी कैन गो आउट एंड एक्सप्रेस एंड इवन टेक द लव दैट पीपल आर गिविंग अस. Absolutely. Tell me a bit about the casting process. How did you come up with the idea of casting Vardhan and Sonu? Well, Harshvardhan Rane, matlab, I always say that Harsh cast me because nobody was working with me. I mean, nobody wanted to work with me. Of course, I had Masti coming there thanks to Ritesh. Ritesh is the one who gave me Masti. Tera Aru mein was newcomers, Aman and Akanksha. But there was no other star out there who was ready to work with me, take my call, meet me, nothing. And when Sanam Teri Kasam released and I had this script and I had always loved Harsh's work. You know, Tesh, I thought he was extraordinary, and Miranda Brothers, I thought he was very good in. And so I messaged him, and I didn't even expect that he'll reply so soon. The day I messaged him, he replied, he met me, he heard the script, he said yes. Okay. It was magical the way it all happened. And then we had a certain window which we had to shoot the film in because Harsh had other commitments, I had other commitments. And at that time we met Sonam, and Sonam's dates were also available, and Sonam was coming in 2 big franchise films, Houseful and Baghi, and she's already a superstar in Punjab and overseas. So, and she has that elegance, that beauty, she's a great actress. So she perfectly suited the role of Ada, and we were fortunate that she heard the narration and within a couple of days she said yes, I'll do this film. So the cast happened automatically. The other person I would talk about is Shad Randhawa, who's someone told me आपकी फिल्म में काला तिल है. I said काला तिल? हाँ, lucky charm. Okay. Whether it's Ashiki 2, एक विलन, मरजावा, सैयारा, now एक दीवाने की दीवानियत, मतलब he's really lucky. And I asked him, but you were also in Satyameva Jayate 2, वो नहीं चली. He said वो मैं भी नहीं बचा पाया. तो मुझे लगता है अब किसी रोमांटिक फिल्म की कास्टिंग होने से पहले शाद रंधावा को साइन करेंगे लोग कि सबसे पहले इसको ले लो फिर उसके बाद एक्टर्स को साइन करते हैं. Right. In recent times, Sayara was a very big hit. It was a romantic film. Now, Diwaniyat is also a romantic. Of course, the story is different. So, do you think it's the revival of romantic films in Bollywood? Both of you, tell me. आई थिंक रोमांस हमेशा से देश में बड़ा था और बड़ा ही रहेगा. इट्स रोमांटिक फिल्म्स कभी भी डाई नहीं कर सकती इस देश में, क्योंकि यंगस्टर्स में हमारे 40 साल से 50 साल से ऊपर के डायरेक्टर्स में भी बहुत रोमांस भरा हुआ है. देख आप, इन्होंने इतनी रोमांटिक फिल्म डायरेक्ट की है, तो रोमांस कभी भी नहीं जा सकता. इट्स द राइट नर्व टू टच. सैयारा ने वो नर्व टच की. फ्रॉम क्लासेस टू मासेस सब जगह वो पिक्चर फटी, तभी वो 500 करोड़ पहुंची. आर फिल्म इन द मासेस इज गॉन क्रेजी बिकॉज इस टाइप का सिनेमा, पीपल आर रिलेटिंग दिस फिल्म टू जीत. पीपल आर रिलेटिंग दिस फिल्म टू मल्टीपल आइकॉनिक फिल्म्स. तो क्योंकि वो नॉस्टैल्जिया, व्हेन यू गो इन द थिएटर यू फील इट, यू फील द म्यूजिक, यू फील द डायलॉग्स, यू फील द एक्सप्रेशंस. वो मिसिंग हो गया है अभी न्यू एज न्यूयॉर्क की स्टोरी और बॉम्बे की स्टोरीज ये सब चल रही हैं, जो कि मासेस जो इस देश का 80% जो जनता है वो जो रिलेट करती है जिस चीज़ से, वो चीज़ें अलग हैं. आप बॉम्बे दिल्ली के लोग मर्सिडीज रोल्स रॉयस प्राइवेट जेट में घूम रहे हैं, बट रेगुलर लाइफ जो ज़िंदगी जीते हैं उनको रेगुलर दुनिया देखनी है. वो ये है. तो आई फील कि वो जो कनेक्ट टियर 2 कनेक्ट इस पिक्चर का है वो इसलिए क्योंकि वो नॉस्टैल्जिया है 2000 का. मतलब ये देश है यश चोपड़ा जी का, मतलब उनसे ज़्यादा मतलब लव स्टोरी आदित्य चोपड़ा, करण जौहर ऑल्सो कुछ होता है, एंड कलोना हो एक्सेट्रा. एंड इफ़ यू आस्क मी ना, समवन पॉइंटेड आउट अ वेरी स्मार्ट ऑब्जर्वेशन ऑन एक्स सम जर्नलिस्ट दैट अगर आप देख लो तो इस साल पहले लैला मजनू रिलीज़ हुई, जो डिड गुड बिजनेस. फिर सनम तेरी कसम आई, विच मतलब क्रिएटेड हिस्ट्री एज द बिगेस्ट रिलीज हिट इन इंडिया. फिर सैयारा आई,
which is a historic blockbuster. Okay, Mohit didn't hit it out of the park. He he hit it out of the city, at that point. Now Touchwood, Ek Deewane Ki Divaniyat has come and also has turned out to be a super hit. There's Tere Ishq Mein coming next month, which I think also is looking terrific. Before this, there was Kabir Singh few years back. Okay, so the point is that love, passion, every human being feels love and passion. राइट और एवरी ह्यूमन बीइंग हर किसी में एक दीवानियत होती ही होती है, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, बुज़ुर्ग हो, जवान हो, एक किस्म की दीवानियत सब में होती है. और ये दीवानियत हर कोई अपना सैयारा ढूंढ रहा है, हर कोई चाहता है कि वो सनम तेरी कसम लूँ हर कोई तेरे इश्क में गिरना चाहता है. तो द पॉइंट इज दिस इज नेवर गोइंग टू गो आउट ऑफ फैशन जब तक हमारे दिल में धड़कन है जो धड़कती है, वो love stories are always going to work. And when you have music, the way Anshul gave this film the music, right, the way Mohit gave Sayyara the music, the way Tere Ishq Mein music is, Sanam Teri Kasam, Himesh sir's music, matlab where there's music of this kind, this caliber, matlab there is no chance that a love story will not work in this country. Tell us a bit about your upcoming projects. Well, as you know, Masti 4 is releasing next month. Then there's Tera Yaar Hu Main with Aman, Indra Kumar and Akanksha Sharma. And there's, fingers crossed, 2 films with him that we are in talks with. We can't talk much about it, and we will do that. And there's some other things also which I have in mind, and I'm sure he also has. As a writer, I have a few films. I've written a film for Ramos sir called Dongri. So fingers crossed, there's the काम अच्छा करेंगे, काम लोगों को पसंद आएगा तो काम और मिलता जाएगा. नहीं, मैं मिलाप सर 4 साल से घर पे बैठे थे, तो उसके बाद ये जो निकले हर महीने एक अनाउंसमेंट कर देते हैं. मैं सुबह उठता हूँ, एक पोस्टर आ जाता है, तो इनका तो अच्छा जा ही रहा है. बट आगे जो हम फिल्म करने वाले हैं साथ में, होपफुली इन दिसंबर वी आर प्लानिंग टू अनाउंस आवर फिल्म. एंड it is I wouldn't say right now. Let's no not. problem. I'll just say one gentleman who is very fond of me, a big superstar, Anil Kapoor sir, told me कि यार तू तेरे पास काम नहीं था, तूने 3 पिक्चर बना दी, अभी तेरी हिट होगी, तू 8 बना लेगा अगले साल. So उनके मुंह में घी शक्कर, भगवान करे ऐसा ही कुछ हो. एकदम. Thank you so much for the interview. Thanks a lot.